गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए सेल्सफोर्स में एक नया प्रोजेक्ट लाया हूं, जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशंस। ये प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो इसके ऊपर बहुत सारी कंपनी में प्रोजेक्ट होते हैं, तो इसके ऊपर काम करना पड़ता है, जैसे सेल्सफोर्स एडमिन और डेवलपमेंट के लिए। तो इसके रिलेटेड हम देखते हैं कि क्या होता है प्रोजेक्ट में। तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेनिफिट है, तो आप इसको के ऊपर प्रोजेक्ट बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको इंटर के लिए भी ये बेनिफिट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये रियल टाइम का प्रोजेक्ट है तो आपको बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट। Order management system applications. The order management system is a Salesforce app and environment meant to the facilitate the creations and approval of the order generated by the firm client. The firm's is order handling teams compares employees in the sales, business, and support roles. The system is meant to handle how an employee interact with handle order and client data will ordering the standard sales clouds utility with customizables lightning web compounds. Next, scope. In scope, support users, business users, and sales users were given their one specific functionality as a per the use case. Order approval the was automated. Triggers were the used to the apply business logic. Lightning web compounds used to create app home page and override actions in Aura compounds. Outsource ensuring the code's coverage using the text classes to the prepare for the deployment was not the done. Batch Apex jobs that could remove the MP3 orders on the timely basis. Limited Salesforce license reduce the number of the users. Next, classes and constitute users contain data such as emails, users ID, password, username, and utility controls such as profiles, role managers, and license, which are then used to the configure sharing of the data and utility. Accounts contain data of the client such as the contacts, informations, related deals, and trade. Order contain order the details to records client order data and the facility order handling invoice. It has a payment data and a progression details for an order. Price book contain price list and product. Product contain product details and stock the details compounds. Next, Lightning Web Compounds. Lightning Web Compounds where the use creating orders using the Lightning records edit data from the searching the product using the control and Apex impacting imperative calls, adding the orders line the items using a control and Apex imperative call, generating the order summary, overriding the new orders button on the order homepage using a lightning aura compounds which calls a lightning web compounds. Next, Apex triggers on user the object used to the restrict the manager of the sales users to the business users, also check and restrains the number of the accounts managed by user based on profiles. Triggers on the account object set emails output for an account contact. Triggers on the order object used to control the reversion of order stage. Triggers on order items object used to maintain the stock quantity and the update it. Next, trigger on the invoice the object used to the update and order the stage and upon invoice generations. Next, approval the process. Order approval the process. The order approval the process work by the directly approving the orders having the amount and orders 1 lakh or dollars
and requiring the managers approval the for orders about that. थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये प्रोजेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए या प्रोजेक्ट जिस टाइम आप किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करते हो उस टाइम आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, तो आपको ये प्रोजेक्ट आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर भी हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आता होगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।